Hello everyone, welcome back to Your Thoughts Are Valid and I hope you all are doing great. तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है सोल्यूशन फोकस ड्रिफ्ट थेरेपी एंड वी विल लर्न अबाउट कि ये क्या होता है देन व्हाट इज द व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एज पर एसएफबीटी then its limitations, its strengths, and we will also read about the techniques we use in solution focused drift therapy. So let's start with the video. SFT, solution focused therapy, or we can say SFBT, solution focused drift therapy. It was developed in 1970s and 1980s by husband and wife Steve D. Shazer and Inso Kim Burke at the Briff Family Therapy Center in Milwaukee, Wisconsin. ओके, तो ये किसने दिया था? स्टीव डी शेजर एंड इंसो किम बर्ग. Solution focused therapy is a brief, goal oriented approach to counseling that focuses on helping clients identify and achieve their desired outcomes. तो ये एक मतलब ब्रीफ मीन्स इट इज फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और ये गोल ओरिएंटेड अप्रोच होता है विच फोकसेस कि जो क्लाइंट्स हैं वो जो भी रिजल्ट चाहते हैं, जो भी चेंजेस चाहते हैं लाइफ में, वो उसको आइडेंटिफाई कर पाए और अचीव कर पाए. ये इस बिलीफ पे बेस्ड है कि हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज होते हैं, स्ट्रेंथ्स होती है जो कि उनको चाहिए होती है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए. इट इज नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू सॉल्व इट. जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें उनका कॉज जानने की जरूरत नहीं होती टू सॉल्व दोज. एसएफबीटी थेरेपिस्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करते हैं, नॉट ऑन द पास्ट. तो बेसिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉब्लम जानना जरूरी होता है, प्रॉब्लम का कॉज नहीं. एंड एसएफबीटी जो होता है, तो ये एक ऐसा अप्रोच होता है जो कि कंस्ट्रक्टिव थेरेपी के अंडर माना जाता है. कंस्ट्रक्टिव थेरेपी मींस, कंस्ट्रक्टिविज्म मींस कि जो लोग हैं वो यूजुअली मीनिंग ढूंढते हैं चीजों में. तो दे आर मीनिंग मेकर्स एंड दे आर अल्टीमेटली द क्रिएटर्स ऑफ देयर ओन रियलिटी. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब वही होता है कि मीनिंग ढूंढ के अपनी खुद की रियलिटी कंस्ट्रक्ट करना. एंड उसी लाइक इसी ये जो अप्रोच है कंस्ट्रक्टिविज्म, इसी पे एसएफबीटी भी रिलाई करता है, और वी कैन से कि एसएफबीटी फॉल अंडर कंस्ट्रक्टिविज्म. तो जो एसएफबीटी थेरेपिस्ट होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो चेंज होता है लाइफ में वो इनएविटेबल होता है, क्योंकि कुछ लोग अपनी खुद की रियलिटी बनाते हैं. और तो मतलब लोग अपनी खुद की रियलिटी बनाते हैं तो फिर अगर वो रियलिटी उतनी अच्छी नहीं है तो दे कैन चेंज दैट फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल. It doesn't require a deep dive into your childhood and the ways in which your past has influenced your present. Will sorry. Instead, it will root your sessions firmly in the present while working towards a future in which your current problems have less of an impact on your life. Moving on, what are the key principles of SFT? पहला तो ये कि people are capable of change. Then clients are experts on their own lives. मतलब इसमें client को ही main center माना जाता है. Then it focuses on present and future and not on the past. And it is also based on the principle कि छोटे छोटे changes से ही बड़े result आते हैं. क्लाइंट्स के पास रिसोर्सेज होते हैं, स्ट्रेंथ होती है जो कि उनको चाहिए होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. देन व्हाट इज द व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर? सो ये एसएफटी जो होता है, इट डजंट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू अबाउट ह्यूमन नेचर, बट ये फोकस करता है क्लाइंट की हेल्थ पे और उनकी स्ट्रेंथ पे. एरिक्सन जो थे, ही बिलीव कि जो लोग होते हैं उनमें खुद के अंदर ही रिसोर्सेज होते हैं, एबिलिटीज होती है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की. इवन इफ दे डोंट हैव कॉजल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम, अगर उनको ये भी नहीं पता कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, स्टिल दे हैव द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. Erickson also believed that a small change in one's behavior is often all that is necessary to lead to more profound changes in problem context. तो
बहुत छोटे छोटे चेंजेस से भी बड़े बड़े रिजल्ट आ जाते हैं, इसका बेसिकली मतलब वही है। We try to base our conceptions and our interventions on direct observation in the treatment situation of what is going on in systems of human interaction and how they continue to function in such ways and how they may be altered most effectively. तो हम अपने conceptions और हमारी interventions हम कोशिश करते हैं कि हम उनको बेस करें अपनी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे, ट्रीटमेंट सिचुएशन में, ये समझ के कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो भी है हमारा वो कैसा चल रहा है, एंड क्या वो ऐसे ही चलता रहेगा तो सही रहेगा या फिर क्या चेंजेस लाए जिससे कि बेटर लाइफ इंसान लीड कर पाए। तो एरिक्सन जिन्होंने की एसएफबीटी प्रैक्टिस किया था 1920 से 1970s तक, ही रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर पीपल टू हैव एन ओपन एंड रिसेप्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज एंड न्यू पॉसिबिलिटीज। It sees people as constructive in nature, meaning that reality is a reflection of observation and experience. And it is based on the assumption that people really want to change and that change is inevitable. Then, what are the goals of SFBT? The major goal is to help tap inner resources and to notice exceptions to the times when they are distressed. ठीक है, तो मतलब अपने इनर रिसोर्सेज को डिस्कवर करना और एक्सेप्शंस भी नोटिस करना, जब ये इनर रिसोर्सेज काम नहीं आ पाए द स्ट्रेस के सिचुएशन में। द गोल इज देन टू डायरेक्ट देम टुवर्ड्स सॉल्यूशन टू सिचुएशंस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दीज एक्सेप्शंस। ठीक है, उसके बाद इन ये जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं इनसे कैसे डील करना है, दैट इज द गोल। Then, thus, the focus of sessions and homework is on positive possibilities either now or in the future. ठीक है, so it is basically on the positive change. Then, what is the role of the counselor? पहला रोल तो यही होता है टू डिटरमाइन हाउ एक्टिव एंड कमिटेड अ क्लाइंट इज टू द प्रोसेस ऑफ चेंज। तो यूजुअली जो क्लाइंट होता है वो तीन कैटेगरीज में फॉल करता है। पहले होता है विजिटर जो कि ना तो प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होता है ना ही सोल्यूशन में। फिर आते हैं कंप्लेनेंट्स जो कि कंप्लेन करते हैं सिचुएशन के बारे में, ऑब्जर्व ऑब्जर्व जरूर करते हैं कि चीजें खराब हो रही है और प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करते हैं, बट लेकिन इंटरेस्टेड नहीं होते उनको रिजॉल्व करने में। फिर होते हैं कस्टमर्स जो कि सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब ही नहीं करते बट उनको सॉल्व करने के लिए भी पूरी तरीके से डेडिकेटेड होते हैं। Then counselor acts as facilitators of change to help clients access the resources and strengths they already have but are not aware of or not utilizing. They are concerned with working together with the client to arrive at solution to the problem. Basically, they allow the client to be the expert of his or her life. Okay. Moving on. A solution focused therapist focuses on what is wanted rather on what is not wanted, assumes that people are already on the way to realizing what they want, does not try to solve problems or find solutions, but rather elicits descriptions of preferred futures and progress being made towards them। ठीक है, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं दे देते वो, दे जस्ट ट्राई टू मेक स्मॉल चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द क्लाइंट एंड जस्ट लाइक मेक द क्लाइंट एक्नॉलेज कि वो फ्यूचर क्या चाहते हैं एंड हाउ मच प्रोग्रेस दे हैव मेड। Then is not gather or analyzing information or trying to understand the client and tries to find questions to ask that connect with the client's answers and help the client to continue to think and talk in ways that become useful to them। ओके, सो ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिससे क्लाइंट दैट कनेक्ट विद द क्लाइंट्स आंसर्स एंड हेल्प द क्लाइंट कि क्लाइंट सोचे और ऐसे तरीके से बात करे कि क्लाइंट को खुद को ये खुद से ये इंसाइट मिले कि व्हाट शुड दे डू टू चेंज देयर लाइफ्स इन अ पॉजिटिव वे। In the general sense, the solution focused therapist engages in three activities with the client। कौन सी activities? पहला हो गया क्वेश्चंस पूछना, दूसरा हो गया कंस्ट्रक्टिव लिसनिंग,
and then responding by echoing and summarizing. Okay, echoing and summarizing. Then the solution focused therapist does not ask questions to gather information, but to help the client talk and think in ways that it becomes useful to them. Then, what are the assumptions of solution focused counseling? Every client must be motivated to achieve something, otherwise, they would not be talking to someone. It also assumes that change is inevitable and clients functions as an agent of change. The task of the solution focused counselor is to help highlight and amplify the positive change that is already underway. However, it is not the therapist's questions that are leading the change. Rather, it is the thinking and talking by the client. Okay, तो ये जानते हैं कि जो चेंज है वो इनएविटेबल है एंड ओनली क्लाइंट्स हैव दिस एबिलिटी टू चेंज देयर लाइव्स. The task of the solution focused counselor is to help highlight and amplify the positive change जो कि already जो वो actually अपनी लाइफ में inculcate कर सकते हैं, so that it can highlight, so that they can help highlight and amplify the positive change that is already underway. However, it is not the therapist question that leads the change, but जो भी client बात करता है या फिर सोचता है, that leads to the change. People are doing their best at any given time. ये भी एक assumption है solution focused counseling का. People have the ability to resolve difficulties but temporarily lost confidence. uh, लोगों पे यूजुअली अपनी डिफिकल्टीज रिजॉल्व करने की पूरी एबिलिटी होती है, बट टेम्पररीली वो अपना कॉन्फिडेंस खो सकता है. Then focus is on increasing people's hope by creating expectancy to change. When change is constant and reality is not fixed or static. Moving on, SFT typically involves following steps. First one is assessment. The therapist and client work together to identify the client's problems and goals. Then, solution planning. The therapist and client work together to develop a plan for achieving the client's goals. Then implementation, the client implements the solution plan. Evaluation, the therapist and client evaluate the progress of the solution plan and make adjustments as needed. Okay. So पहला है assessment, then solution planning, then implementation, and then evaluation. Moving on, what are the techniques used in SFBT? पहला हो गया मिरेकल क्वेश्चन. ये क्या होता है? बेसिकली फोकसेस ऑन हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो डिसअपियर हो चुकी है. ठीक है. जैसे काउंसलर बोलेगा कि लेट सपोज कि टुनाइट व्हाइल यू वर स्लीपिंग a miracle happened and all your problems that you brought here are solved. So how would you know it and what would be different in your life? So that is like miracle question which is used. Okay. Then scaling. Scaling is where the client is used to asked to use a scale from 1, which is low, and 10, which is high, to evaluate how severe a problem is. Like they can ask the rate your anxiety from a scale of 1 to 10. Then scaling helps clients understand both where they are in regard to a problem and where they need to move in order to realistically achieve their goals. Then compliments. So जो counselor है, that counselor gives the client compliments, which are written messages designed to praise the client for their strengths and build a yes set within them, which is a belief that they can resolve difficulties. Compliments are usually given right before clients are given any task or assignment. तो बेसिकली काउंसलर जो है वो क्लाइंट को कॉम्प्लीमेंट्स देता है, जो कि यूजुअली रिटर्न मैसेजेस होते हैं, जिसपे क्लाइंट को प्रेस किया गया होता है, उनकी स्ट्रेंथ्स हाईलाइट की गई होती हैं, जिससे कि क्लाइंट को ये बिलीफ आता है कि दे कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. देन ये यूजुअली तब दिए जाते हैं जब कोई टास्क या असाइनमेंट दिया जाता है क्लाइंट को. Then clues, which are intended to alert clients to the idea that some behavior they are doing now are likely to continue and they shouldn't worry about them. तो ये क्लाइंट को सिर्फ अलर्ट करने के लिए होते हैं कि कुछ बिहेवियर जो भी हो रहे हैं वो होते रहेंगे, और they are not causing any problem, so they should not worry about those.
Then skeleton keys, which are procedures that have worked before and that have universal application in regard to unlocking a variety of problems. ठीक है, जो procedures client के लिए पहले काम करे हैं and like universally applied किए जा सकते हैं to a variety of problems को, that is a skeleton keys. Like pros and cons list banana for a situation. Coping questions, like asking clients about how they cope with their problem and what has worked well for them in the past. This can help clients to identify their strengths and resources. And then the last is exception questions, where the therapist asks client about times when the problem was not as severe or did not occur at all. This helps the client to identify exceptions to the problem and to identify what they were doing differently during those times. Okay. So these are certain techniques. Then the treatment plan. How do we come up with a treatment plan? First, we find a solvable complaint. Then we establish goals. Then we design an intervention for how to establish those goals. Then we like intervention design कर ली, फिर हम strategic task देखते हैं कि कौन से task करने होंगे to achieve those goals. Then positive new behaviors and changes are identified and emphasized. Then they are stabilized for a period of time, and then the treatment is terminated. Setting a direction toward the desired outcome, describing a preferred future, describing progress towards instances of the preferred future, follow up, rating. Then what is the timing? It is usually brief and it is oriented in the present, and it usually takes 3 to 5 sessions. Moving on to finding solutions. So SFBT views clients as experts on their complaint. They assumes clients have strengths. They focus on natural consequences, uh, interrupt and change non-productive behavior, provide rationale how tasks can be helpful, make interventions congruent with people's worldviews, learn from past solutions, embed compliments and suggestions, encourage new behavior, create expectancy for change, and make solution practical and specific. Moving on to strengths and limitations of SFBT. Strengths क्या है? तो पहली strength क्या है? That it emphasizes brevity and its empowerment uh, of client families. Okay, तो brevity का मतलब क्या होता है? It means like shortness of time basically. तो मतलब ये काफी like शॉर्ट होता है, लाइक 3 to 5 सेशंस में ये कंप्लीट हो जाता है. तो मतलब कि ये एम्फसाइज करता है कि लाइक नॉट लाइफ इज लाइक not that long. So it basically emphasizes the shortness of time, um, and like its empowerment of client families on client families की इसका क्या, how client families can empower it. Then um, moving on to second strength, which is it displays flexibility and show excellent research support of its effectiveness. Then third one is it reveals a positive nature of working with a variety of clients in various settings, including school children. Then it focuses on change and its premise that emphasizes small changes in behavior and it can be combined with other counseling approaches. And what are the limitations? It pays almost no attention to client history. Then there is lack of focus on insight and the use of teams. Like some practitioners use teams that can drive up the cost. Okay. So these are strengths and limitations. Moving on. Yes, so that was it for SFBT. So we learned about techniques and everything. So main thing which we need to remember is that it was given by Steve D. Shazer and Inso Kim Bud, and it is like it helps clients identify and achieve their desired outcomes. And it is constructive in nature. Then what else? What are the key principles that people are capable of change and they are expert of their own lives? That it
focuses on the present and future, not on the past, and the small changes can lead to big results. And clients already have the resources and strengths they need to solve their problems. Then, what is the view of human nature? It's basically like they know that change is inevitable and they actually want to change towards good. And it is constructive in nature, which means that reality is a reflection of observation and experience. So, yeah, that was about view of human nature. Then, goals. Goals was basically that the inner resources say, like client को aware करवाना, then solutions की तरफ उनको direct करना, then role of counselor was basically कि वो guide करे client को solution ढूंढने में. So yeah, that was it. Then assumptions we have already studied. Uh, What are the steps usually? Assessment, solution planning, implementation, evaluation, then techniques which are used, miracle question, scaling, complements, clues, skeleton keys, scoping questions, exception questions. Uh, then strengths and limitations we have studied. So that was it for SFBT. If you have any doubt, please do ask in the comment section. And that is it for today's video. I hope it is pretty much clear. And thank you so much for watching.